शोज मैं 30 शो 40 शो एक साथ देखता हूँ. Message for young photographer. Don't give up. Okay. It's like saying, do you like human beings? I don't like all human beings. I like some human beings. I hate them. And that's I think interesting fact is that R. Marman in that movie is also want to become a photographer. तो वही ना वही देख And के this I think mainly movies, shows. मैं बहुत ही हाँ and थोड़ा सा गेमिंग का अभी तक किया है. तो okay. कभी-कभी काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ. मतलब रुकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए. So that's the whole idea is keep rolling. Yeah. Photographer नहीं होते तो फिर आप क्या होते? बिल्ला होता है. My God, this answer motivates so many people. It means Villa can do many things. हाँ मतलब. Okay, so I'll give you an example from a different point of view. I'm an atheist, but I'm not an atheist because I was born an atheist. I was born very religious. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. मैं प्रेरणा आप सभी का 1-to-1 विद प्रेरणा में स्वागत करती हूँ. आज का हमारा खास एपिसोड है लेट्स रॉल. इस एपिसोड का नाम हमने लेट्स रॉल क्यों रखा और इसके पीछे की क्या कहानी है, ये जानने के लिए आपको हमारा एपिसोड देखना होगा. आज के हमारे खास मेहमान हैं शिवाजी सेन, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, और साथ ही साथ बेहद उम्दा इंसान और जिंदा दिल इंसान है. तो चलिए मिलते हैं शिवाजी सेन से. हेलो सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम 1-to-1 विद प्रेरणा. कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक. सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने फोटोग्राफी क्यों चूज करी? फोटोग्राफी एक्चुअली स्टार्ट हुआ, पहले मैं पेंट करता था. आई वाज इनटू आर्ट अर्लियर एंड जब मैं कॉलेज गया तो धीरे धीरे वो पेंटिंग और इसका ये छूट गया, प्रैक्टिस छूट गया, टाइम उतना नहीं मिलता था. एंड देन ऑन अ हॉलीडे आई पिक्ड अप फोटोग्राफी एंड मुझे अचानक लगा कि इट वाज लाइक क्रिएटिंग अ पेंटिंग बट वेरी क्विकली. सो तब से मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ गया. ड्यूरिंग द फोटोग्राफी कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े इनिशियल स्टेज में? इनिशियल स्टेज में आई थिंक द मेन थिंग इज द जर्नी कि आप फिगर आउट कर रहे हो कि आपको क्या करना है. बिकॉज फोटोग्राफी आल्सो हैज सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जॉनर्स. सो आई थिंक द फर्स्ट चैलेंज इज कि आपको क्या करना है फोटोग्राफी में. राइट, सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स. द सेकंड थिंग इज हाउ डू यू मोनेटाइज, how do you earn or make a living from photography. So these are some of the basic challenges we all face. तो आपकी जो फोटोग्राफी का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है जितने भी फोटोग्राफर हैं. तो ऐसा कब लगा फोटोग्राफी के टाइम में कि मुझे इस टाइप की फोटोग्राफी करना है, या फिर ये स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में क्लियर था कि नहीं मुझे ऐसी ही फोटोग्राफी करनी है, या ये मेरा स्टाइल होगा, या ये मेरा स्टाइल है? मेरा स्टाइल अभी तक मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अभी तक उसको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो हमेशा चेंज होते रहेगा सम वे और द अदर. राइट, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट कि अभी बन गया है, अभी सेट हो गया है. वो मैं विश्वास नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि हम हर रोज सीखते हैं, हम मरते दम तक सीखना चाहिए. और ऐसा कभी हुआ कि आई होप सो कि ऐसा नहीं हुआ आई थिंक, बट ऐसा कभी भी हुआ कि जो आपके क्लाइंट हैं उन्हें वो पिक्चर्स अच्छी नहीं लगी, या वो ये हैप्पी नहीं हुए आपके काम से? It happens, yeah, of course. See, because clients आते हैं अपने दिमाग में कुछ आइडिया लेके. तो एक जो चीज़ बहुत ही होता है कि they want to hire you based on what you're known for, but then they'll want you to do something else. तो हायर करके बोलेंगे आप ये बना दो. ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप you don't go to a Chinese restaurant and order डोसा. ठीक है, मतलब जिस चीज़ के लिए जिसके पास जा रहे हो आप वही चीज़ ऑर्डर करो. राइट, तो ये वाला मिसकम्युनिकेशन और डिस्कनेक्ट हमेशा होता है. तो आप कैसे हैंडल करते हो? नथिंग, मैं सिंपली बताता हूँ कि देखो अगर आपको ये वाला काम चाहिए जो आप मुझे दिखा रहे हो तो मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ. मैं आपको दूसरा कोई फोटोग्राफर रेकमेंड कर दूंगा जो आपके लिए वो कर देगा. सो इट्स समटाइम्स पासिंग ऑन वर्क बिकॉज यू हैव टू से नो टू समथिंग व्हिच यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एंड बी डोंट वांट टू डू. आपके हिसाब से जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं और जो हॉबी वन होते हैं, दो क्या डिफरेंसेस हैं? लाइक डिफरेंसेस तो हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू लाइक कोई भी डिफरेंस नहीं है. द मोमेंट यू आर क्लिकिंग अ पिक्चर एंड यू से आई गिव एन एग्जांपल, मुझे इसके लिए 100 रुपए दे दो. द मोमेंट समबडी गिव्स यू 100 रुपीस, यू बिकम अ प्रोफेशनल
ठीक है, the moment somebody doesn't give you 100 rupees, you're not a professional. But when you start taking that 100 rupees, Yeah. you have to deliver. Right. ठीक है, so the professional is somebody who guarantees कि मैं आपको कुछ तो standard का बना के दूंगा. जी. Right, while a hobbyist हाँ. does not have that responsibility. Right. This is the only difference. Sometimes hobbyist can give you better work than a professional. ठीक है, but वो guarantee कि जब मैं पैसा डाल रहा हूँ उसके रिटर्न में मुझे एक स्टैंडर्ड का काम मिलेगा कि नहीं, that's the professional's responsibility. अगर कोई जो न्यू फोटोग्राफर है और उसके पास इनफ इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्या उससे लाइक वो किस तरीके से और अच्छे तरीके से फोटोग्राफी कर सकता है, उसके लिए कोई एडवाइस या कुछ? So I, for the longest time, was using a D5300, which is even a smaller model than that camera, okay, which you're shooting on right now. So it is not about the camera. Some of my best work is shot on very amateur DSLRs. So it is not about the equipment, it is not about the camera. It is just a tool. ठीक है? तो आप कभी भी अच्छा, आप किस राइटर को मानते हो? कोई राइटर का नाम ले लो. विनोद कुमार शुक्ल. Okay. Did you ask him आप कौन सा पेन यूज करते हो? नहीं ना, तो तुम वही फोटोग्राफर मत पूछो कौन सा कैमरा यूज करते हो. ओके, आई जस्ट वांट टू कि अगर जैसे न्यू फोटोग्राफर का बहुत सारे जो फोटोग्राफर होते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं तो उन्हें पता चला कि आपका इंटरव्यू है, तो दे आर लाइक कि तो पूछ सकते हैं ऐसा कि कौन सा अच्छा होता है, या फिर स्टार्टिंग के लिए अगर हमारे पास नहीं भी है इक्विपमेंट्स तो क्या हम अच्छे तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं. दैट्स काइंड ऑफ. शुरू में सीखने के लिए तो यू बेग बोरो स्टील. सो यू आस्क, अगर कोई दोस्त है जिसके पास कैमरा है उससे एक दिन बोरो करो, जाके शूट करो. बट बेसिक देखो, मैं जब भी कैमरा के बारे में सोचता हूँ ना, मैं हमेशा व्हाट आर द मीन्स कि आपके पॉकेट के हिसाब से क्या है. तो समझ लो, अगेन टेक एन एग्जांपल कि अगर आपका 100 रुपए का बजट है, आपको 100 रुपए खर्च करने कैमरा पे, तो आप 100 रुपए लेके जाओ. 100 रुपए में जितने भी मार्केट में जितने कैमरास है आप देखो, उसके बाद जो 110 रुपए का आ रहा है वो वाला खरीद लो. ठीक है, थोड़ा सा अपना बजट पुश करके उससे वाला नेक्स्ट वाला जो है वो वाला खरीद लो. लेकिन ये पूरा जो चॉइस होता है बजट के ऊपर होता है, क्योंकि आप ज्यादा अगर स्पेंड नहीं कर पाओगे तो आप क्यों करोगे. ठीक है, तो उसके अंदर ही आपको देखना है, खोजना है. बस ये कि हॉबी स्टार्ट करने के लिए उस टाइम आप मत देखो कि क्या कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट. हाँ, स्टार्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट लाइक फ्यू इयर्स ऑफ फोटोग्राफी इज गोइंग टू बी, इट्स जस्ट यू लर्निंग, राइट, बेसिक्स, नॉट इवन दिस थिंग. रिसेंटली आपने एक वेब सीरीज बनाई कीप रॉलिंग, जिसमें आई थिंक आपने डायरेक्ट भी किया है, राइटिंग भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, इवन कास्टिंग तक, ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक आपने करा. तो उसका जो ड्यूरिंग जब आप वो बना रहे थे, तो एज अ फोटोग्राफर इट हेल्प्स यू in some ways, and I'll tell you when you're speaking to your DOP and cinematographer, that time you have a little more understanding about what their department is and what their thing is. But I also kind of तो ये जो मैंने शो बनाया, मैं एक्चुअली उसमें ज़्यादा विजुअली मैंने उसको बहुत सिंपल रखा है. तो मैंने एक्चुअली अपना एस्थेटिक और ये उस पर डाला ही नहीं है. मैंने उसको एकदम दूसरी तरीके से शूट किया है, बिकॉज आई डिडंट वांट द स्टोरी टू बिकम अबाउट कि ये बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई डिडंट वांट दैट. आई वांटेड इट टू बी अबाउट द स्टोरी. सो मैंने बहुत प्लेन रखा है, बहुत ही, बिकॉज वो फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है. सो इट्स केप्ट वेरी प्लेन एंड ब्लैंड व्हेन इट कम्स टू द विजुअल ट्रीटमेंट. But it does help to connect and speak to your cinematographers. That really helps, your photography background. When you are doing clicking pictures, so is there something in your mind, or maybe it's like focus on key whatever I have decided earlier? No, I mean depend करता है. अगर कुछ commercial assignment हो, then obviously working with a goal in mind कि हमें ये shots चाहिए जो हमें deliverables है. If you're doing your personal work and it's very different, then you're just going with the flow. एंड कुछ दिमाग में हम लेके नहीं जाते, हम देखते हैं कि उस टाइम पे क्या अच्छा लग रहा है, लाइट कहाँ अच्छा लग रहा है, क्या मूड ये है, क्या इमोशंस है, उसके ऊपर हम तस्वीर खींचते हैं. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. आपकी फैमिली बैकग्राउंड में या फैमिली में या कोई रिलेटिव्स कोई है जो जिन्हें फोटो में काफी इंटरेस्ट था? सो एक्चुअली आई डिडंट नो दिस, बट आई केम टू नो मच लेटर, बट दैट माय फादर यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, when he was younger. So now when I see all the family photographs, it's taken by him.
बचपन के जितने भी पिक्चर्स थे। तो नाउ ही डजंट डू इट एनीमोर, ही डजंट इवन पिक अप द कैमरा, बट वो यंग एज में उनका बहुत शौक था। सो इट्स लाइक ये खून में ही था कहीं पे, हाँ थोड़ा सा तो था इन्फ्लुएंस, बट मुझे पता ही नहीं था। लाइक ओनली दैट आई सी द पिक्चर्स नाउ, अभी मैं वो 70s 80s के पिक्चर्स देखता हूँ व्हिच ही वुड क्लिक, वेरी नाइस पिक्चर्स। जब उन्हें पता चला एक्चुअली कि आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उनका क्या रिएक्शन था? इट्स लाइक यार ये कर लो या फिर नहीं ठीक है तुम जो करना चाहते हो वो करो इसको? तो इसके पीछे एक फनी स्टोरी है कि जब मैं पहले गेमिंग में था, which was also an unconventional background. Okay. ठीक है, so I was in gaming from 2005 to 2010. ठीक है, that was my first career, my first profession. So उस टाइम मुझे MBA करना था. So when I started applying for an MBA, then I realized कि मुझे ये नहीं करना, मुझे आर्ट स्कूल भी जाना, मुझे फोटोग्राफी करना है. So I applied to MBAs and I applied to some art schools in UK. ठीक है, and when I finally got through both, मुझे वो decision लेना. So at this point, my father used to be in Bombay and I was in Delhi that time. So एक दिन उनका कॉल आया, and Papa normally has one drink every evening, ठीक है ना, एक पैक वो पीते हैं. तो उस दिन शायद 2 पैक पिया था या 3 पैक पिया था, मुझे पता नहीं. मुझे एक फोन कॉल आया, and he gets little happy when he's drinking, so he gets happy. And he called me and he said, listen, if you feel like doing photography, अगर तुझे arts pursue करना है, please कर. Your education is on me. So I will support your this thing, whatever path you take. So the secret behind that conversation was he had just watched 3 Idiots. ठीक है? That time. Oh my God. तो उसका influence उन पे आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें अगर आर्ट्स करना है तो तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, like that kind of a this thing. ठीक है? So it's a weird thing because cinema has an influence on somebody else's life in such a big way. And you don't realize it. And that's I think interesting fact is that R. Marman in that movie is also want to become a photographer. हाँ, तो वही ना, वही देख and के. And this same passion. वही देख के that character when he becomes the wildlife photographer and he becomes successful, तो पापा वो देख के उनको लगा कि नहीं यार ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है. I think you should follow it. तो ऐसा लेंस वाइज अभी कभी आपको ऐसा लगा कि इस लेंस मतलब which lens you are using most or maybe you like that? I want to know. Okay, so technically as I said, I believe कि आप कुछ भी यूज कर लो चलता है. It's about how you shoot or what you shoot. लेकिन there is a certain preference that I have. Is धीरे-धीरे मैं I go to higher this thing depth of field and I go to a wider lens. So पहले मैं 35 पे शूट करता था 1.8 पे. Okay. फिर मैं 24 पे शूट करता था 1.4 पे. अभी मैं कभी-कभी 20 पे शूट करता हूँ 1.4 पे. So these are camera things which people photographers will understand. But I use a prime lens. I never use a telephoto. So मेरा एक ही लेंस रहता है. मैं किसी भी टाइम पे 2-3 लेंस लेके नहीं घूमता. Wow, sounds good. Nice. एकदम एक लेंस. Because it helps you to push, like then you are changing, where you want to be, where you want to go to make that frame happen. And it's like जब आप खाली रहते हो, it's like most of the time आप busy रहते हो, I know that. But ऐसा कभी होता है कि कभी हम फ्री रहते हैं या खाली टाइम में बैठे रहते हैं, तो उस टाइम में आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हो या फिर कुछ एक्सप्लोर करते हो या फिर रीडिंग, मूवीज, वॉचिंग? मेनली मूवीज, शोज. बहुत ही हाँ. एंड थोड़ा सा गेमिंग का अभी तक किया है. तो कभी-कभी काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ. एंड शोज, व्हाट काइंड ऑफ शोज? शोज मैं 30 शो 40 शो एक साथ देखता हूँ. Oh my God. Like मेरा साइमल्टेनियसली चलता रहता है. किसी का एक एपिसोड उधर, किसी का एक एपिसोड उधर. I don't want to names. Yeah, no, anyone. it'd be too difficult to name. Yeah. Okay. Because I watch so much. Oh, okay. Yeah. Okay, nice. ऐसे कोई फोटोग्राफर जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो या जिनका काम आपको काफी पसंद हो, maybe from anywhere? So there's Helmut Newton, there's Guy Bourdin, there's Jean-Luc Sieff, there are all these photographers who are really listening to me. Big for me. Araki, Japanese. Okay. So German, French, American, काफी अलग-अलग influences हैं. But yeah. And in photography, like you explore more, but ऐसा कभी लगा कि इस टाइप की फोटोग्राफी मैंने अभी तक नहीं करी है या ये मैं आगे चल के इसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है? Maybe your nature, whatever you don't. It's a very open journey there. I don't know where and what will interest me tomorrow.
Okay. ठीक है. So अभी तक वो एक्सप्लोरेशन में करता रहता हूँ कभी कभी, बट अभी तक वो सेट नहीं है, मुझे सेट भी नहीं करना है. कि अगर 5 साल बाद में अगर सिर्फ मैं बिल्डिंग्स के तस्वीरें लूँ तो चलेगा, फूल का तस्वीर लूँ तो चलेगा. इट कैन बी एनीथिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो, वेयर योर माइंड टेक्स. Go with the flow kind of हाँ, thing. वेरी मच. आपको ऐसा कब आइडिया आया कि मुझे वेब सीरीज बनानी है, डायरेक्ट करनी है, प्रोड्यूसर बोलते हैं? I got hired to basically direct a series Okay. for an OTT, which I'll not name, and it went horribly. And we had to walk out of the project because वो बहुत ही घटिया producers थे और कुछ बहुत ही पंगा किया था उन्होंने. लड़कियों पे हाथ उठा रहे थे, ये कर रहे थे, बहुत ही गंदा सीन हो गया था. So we had to walk out of it, but that suddenly gave me an idea कि यार इतना घटिया content बन रहा है life में, why not make something which is my own? And there's always this idea कि we always criticize or complain or talk about other people's work, but खुद बनाना चाहिए, क्योंकि वो जितना भी घटिया हो, जितना भी ये हो, एटलीस्ट खुद आपने कुछ बनाया है, instead of just commenting on somebody else's work. So when I went into that self-reflection, I thought देखो मुझे खुद अपना कुछ try करना है. That's how the web series came along. तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, लाइक तो कैसे टैकल करा इन सारी डिफिकल्टीज, फिल्म बनाना, एक साथ ये सारी चीज़ों को लाना, अरेंज करना, ऑल दीस थिंग्स. Especially because it was a very small team project. There were very few people involved, so everything was on favors. हम सब कुछ फेवर मांग के करते थे, इसीलिए it took so much time also. It took us a year to kind of try and complete it. And even like right now in the next 7-8 days we've got a few scenes which we are shooting. Okay. तो अभी तक वो चल रहा है, उसके बाद शायद जाके हम वो प्रेजेंटेबल कर पाएंगे और दिखा पाएंगे, तो मतलब पिच कर पाएंगे. एंड इस सीरीज का नाम आई थिंक इट्स कीप रोलिंग. व्हाई यू डिसाइडेड? सो कीप रोलिंग का आइडिया था कि जिंदगी में जो कुछ भी हो ना, अच्छा, मतलब रुकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए. सो दैट्स द होल आइडिया, इज कीप रोलिंग. So it means the camera also, and it means that in life also don't stop. तो लाइक आप इस सीरीज के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? इट्स लाइक मे बी इसमें कास्ट कौन से है, या फिर आप कब रिलीज कर रहे हो, व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट लाइक. कास्ट तो बहुत वास्ट है, a lot of nice actors who are part of it. They've come in and done small cameos and special appearances. They're sprinkled around the entire show. Release तो अभी पता नहीं, because it's going to go into, as I said, we're going to go into meetings now. And where it's going, how it's going, we have no idea right now at this moment. Okay. So you want to make another series or after that, if it's released? There are two options. One is, or if this sells, we might have to go into season 2. Then season 2 बनाना पड़ेगा. If that does not happen, then I would like to make a feature film next. And if someone wants to like कि आप उनकी मूवी या सीरीज या जो whatever, अगर वो चाहें कि एज अ डायरेक्टर आप उन्हें डायरेक्ट करो, तो और मे बी आपका खुद का ही करना. I'm not into that right now. I don't think I'll take on a different project. तो इट्स लाइक कि अभी यू आर प्लानिंग कि ऐसा है कि अभी मैं वो चीज़ें डायरेक्ट करूँगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिस तरह की चीज़ें, जो मेरा विजन और क्राफ्ट है वो मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ, ऐसा काइंड ऑफ. ड्यूरिंग द फोटोग्राफी आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो कुछ ऐसी किताबों के बारे में आप बताना चाहेंगे, या जो पढ़नी चाहिए एज अ फोटोग्राफर, या फिर सभी को पढ़नी चाहिए? So I would talk about photography books. The point is, इतने सारे artists हैं. So more than the books, I think we look at artists. Okay. We look at their work. I mean, there are a lot of books which talk about art, but it's always just better to see art, and feel it. So I would say there are a lot of artists you can explore. So there's not one specific name I can give you, right? I would say जो भी आप जिस genre में हो, you find out who the masters are in that field, and you see their work. So if you were talking in the context of, let's say, cinema, not photography, you would find out who are the world's best directors. Okay? Find the 10 most or 15 most influential directors in cinema, and then watch their works, so that you get an idea कि आपको क्या पसंद है. That is your best learning. You will realize what is your taste. Is it a Hitchcock? Is it a Tarantino? Is it a Kurosawa? So you figure out what your zone is. Like discover yourself. Discover yourself. Like for me, Richard Linklater is one of my favorites. Okay. Right. So as I said, it's what is your zone.
What is your thing? Figure it out. And there are some people who is like ऐसा बोलते हैं कि जो रात को जगते हैं वो kind of उल्लू है, मतलब day person और night person really. So which kind of person? I'm a full night person. मैं दिन में function ही नहीं करता. मतलब करना पड़ता है काम के लिए shoot के लिए, but otherwise I like going to sleep at 5-6 in the morning and then I like to sleep till 1-2. Okay. मेरा दिमाग gets most active when the sun goes down. That's when I'm most active. तो जो लाइक फोटोग्राफी का जो टाइम होता है वो आप कौन से टाइम में प्रेफर करते हो? इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम और नॉट? No, I mean, to be honest, as long as there's good light, I don't mind. So afternoons are good. Evening light, sometimes the golden hour is very nice. So that works. But otherwise, it's not about like any time can work. And I don't know who said to me this, but I want to ask कि लाइक आपका ऐसा है कि कुछ टाइम के बाद काइंड ऑफ ऐसा आपका फितूर है कि आपको वो जगह चेंज करनी होती है या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो न्यू सिटी, न्यू जगह, लाइक नई जगह, आप एक जगह लाइक आप ज़्यादा टाइम तक रहना पसंद नहीं करते, ऐसा काइंड ऑफ कुछ है? Okay. Because that's happened in my life. So like first 10 years of my life I was in Patna. Then next 5 years I was in Dehradun. Okay. Next 6 years I was in Bombay. Then next 5 years I was in Delhi. Then next 4 years I was in UK. And then in the last 8-9 years I've been in Bombay. तो मैं बॉम्बे में अटक गया हूँ. लेकिन मन करता है कि हर 5-6 साल like I go somewhere else and be somewhere else. बॉम्बे ने आपको पकड़ लिया? बॉम्बे ने पकड़ लिया, हाँ, फंस गया हूँ. Okay. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा because I don't know about this. Patna. What was the reason behind this? Patna, then Dehradun, and then. Born and brought up Patna. Okay. Schooling in Dehradun. Nice. College and first job in Bombay. So exploring. Second and third job in Delhi, Noida, Gurgaon. And उसके बाद UK में masters and work. And then वापस आकर Bombay with photography. And how do you know Bengali then? Because I am Bengali. I'm a Okay, Bengali, you are a born and brought up Bengali in family. Bihar. Yeah. Okay, nice. And your father is also Bengali. Yeah, parents, both parents. You know many languages, I think. I mean, I know Hindi, Bengali, and English. Nice. बिहारी थोड़ा सा समझ लेता हूँ, but Okay, समझ भोजपुरी लेता का. हूँ. भोजपुरी, nice. कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ नोट्स है जो भी whatever you want to share with the photographer, ये चीज़ आप ज़रूर, मतलब एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कई बार फ्रेजल वर्ड में, मतलब फ्रेज इन द सेंस कि लाइक गांड बांध के रखनी चाहिए, ये चीज़ तो बेसिक एज अ फोटोग्राफर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा काइंड ऑफ. shoot a lot in the beginning. Okay. And धीरे धीरे you come down to shooting very little. Yeah, but that's the process, I think. Right? पहले बहुत शूट करो, बहुत शूट करो, बहुत शूट करो. उसके बाद धीरे धीरे बहुत कम शूट करो, बहुत कम शूट करो, बहुत कम शूट करो. So I think that's the process. But that पहला बहुत शूट करो वाला is could be a 5-year thing, 6-year thing. मतलब explore everything. और हम सेइंग कि कई बार जब हम डिसाइड करते हैं कि लाइफ में ये करना है, ये कोर्स करना है या फिर एक्टिंग करनी है या फोटोग्राफर बनना है, डायरेक्टर, राइटर, व्हाटएवर, तो आपकी लाइफ में जब आपने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, तो वो कौन सी चीज़ थी या कौन सा ऐसा टाइम था या मोमेंट था जब आप फील लगा कि नहीं मुझे फोटोग्राफी ही करना है? So that decision between the MBA and the art school was the main cusp moment कि मुझे लगा नहीं, मुझे आर्ट में ही जाना है. So I still don't think photography is the thing to say. I think artist is the better way to put it. Because when you say artist, then you're not restricted to one medium. ठीक है, medium कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को express कर रहे हो. So let's say when I about the show, I wrote the show with a friend of mine. So I became a writer. ठीक है, I produced it, I directed it, so I became a director. So the idea is, if you're in the arts, you should be able to express yourself in no matter what way you use, whatever the medium is. Yeah. Tomorrow, if I wanted to wake up to poetry or painting or any other medium to express myself, I should be able to do so. So you don't develop yourself as a certain thing; you develop yourself as an artist, right? जैसे कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं
and आप ही घर पे शूट कर रहे हैं, thanks to you. So there are lots of things. It's a it's kind of, I can say, it's a mini museum. मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, देखा है, तो ये लाइक आपका पैशन है कि लाइक मुझे जो चीज़ें जैसे काफ़ी ओल्ड टाइपराइटर है एंड वॉट एवर देयर सो मेनी थिंग्स, तो इकट्ठा करना एंड इन्हें रखना. So it's a very interesting thing that I believe दो टाइप के इंसान होते हैं, एक है settlers, एक है wanderers. ठीक है, you know this basic classification ना. कुछ जो हमेशा सेटल करने के लिए खोजते हैं, उनका पूरा लाइफ नहीं होता कि सेटल कर जाओगे, एक ही घर में पूरी जिंदगी बिता देते हैं वो. और दूसरा रहता है wanderers की कहीं पे भी उनका मन नहीं लगता, वो हमेशा घूमते रहते हैं. ठीक है, so I am a wanderer by this thing. So the reason, let's say, I put in so much effort into making this house into a certain space is because I believe you should always be surrounded by some form of inspiration. ठीक है, so even in your dullest moment, in your toughest moment, in your saddest moment, in your most uninspired moment, don't put up your own work, by the way. Put up the works of others who inspire you. So this is a collection of many different artists, from photography, painters, movies, filmmakers. So I have surrounded myself with those kind of things which inspire me, like the work which I like or admire. Right, so that whenever I'm feeling low or whenever I'm feeling this thing, I'm surrounded in an environment which will always make you think like, fuck, there is so much beauty and there's so much art, and it will take you out of that sadness. So that environment becomes very important for me because वो मेरे mood को affect करता है, मेरे इसको affect करता है, emotions को affect करता है. So as much as I have made this, I am also in the belief कि अगर मुझे आप कल बोलो, चलो शिवाजी हमें आइसलैंड जाना है, मैं 2 सूटकेस पैक करूंगा, ये सब छोड़ के चला जाऊंगा. ठीक है, because these are things. I might keep my books somewhere, मैं कहीं पे स्टोरेज में डाल दूंगा या किसी फ्रेंड के यहाँ डाल दूंगा. बुक्स के अलावा सब कुछ मैं बांट दूंगा, बेच दूंगा, कुछ कर दूंगा, I'll move. So my attachment is not towards places or things. I always believe that home is wherever you go and you know want to stay. And people are definitely home. But वो तो travel कर सकते हैं तुम्हारे साथ. Do you believe detachment comes from attachment? Does detachment come from attachment? It depends on the stages. अब आप किस stage में हो उसके हिसाब से आपको detachment का ये आएगा. क्योंकि some people understand detachment, like people who go into detachment but don't understand it. Yeah. So you're in a way right, because once you pass through attachment is when you will get to detachment. Right. Because then you know what you're doing. Otherwise, if you're detached without knowing the whole journey and the whole circle, then you're missing out. Okay, so I'll give you an example from a different point of view. I'm an atheist, but I'm not an atheist because I was born an atheist. I was born very religious. Okay, so it took me the whole journey to understand that I'm an atheist because मैं religion के पूरे through जा चुका हूँ. ठीक है, so that's another way of saying the same thing. तो आप easily attach हो जाते हो चीजों से या people या फिर like आपको time लगता है attach होने? It depends on how the other thing is reciprocating. Like it's a two-way thing, and attachment should be a two-way thing. Yeah. So even if it's, let's say, an art form, if that art form is giving back to you, then you can grow attached. A pet who's giving love back to you, you can grow attached. Right. A human being who's giving you love back, you can grow attached. Right. If you're not getting that love back from the other side, then you should not get attached. Then it causes pain. Now, I want to know कि आपकी जो फोटोग्राफी है, मोस्टली जो मैंने मतलब देखी वो ब्लैक एंड व्हाइट है, it's not colorful. So what's the reason behind this? Or maybe it's like there is no reason. Yes, I am a black and white करता हूँ. There is no reason. There is whatever feels right. See, क्या होता है ना, when you take a picture, that picture should tell you that this is, I'm meant to be a black and white picture or a color picture. Okay. And I'll tell you why. So there are two things. One is a technical reason and one is an emotional reason. So firstly, I hate people who do this, that they make two versions of an image. एक black and white, एक color दोनों डाल देते हैं. ठीक है. It's like क्या कर रहे हो तुम? It's like वेज बिरयानी भी बनाया, मटन बिरयानी भी बनाया, दोनों को मिक्स करके दोनों डाल दिया, और बोला कि ये लो. ठीक है ना, तो मत करो. So
know what you are, know what your intention is, know what you're meant to be. So if you're meant to be a black and white image, it will be a black and white image. Okay. Most of the times, if it's meant to be a color image, remember that the color should work. You understand? So if the colors make sense, if they come together properly, then I always shoot a color image. If the colors don't make sense and the black and white makes more sense, right? Because nothing should distract you from the idea of what the photograph is showing. When the color supports that idea, then it's a color image. When the color is distracting you from what you are trying to show, then it should be a black and white image. Okay. I want to know, if you are not doing this, then what? अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते, तो फिर आप क्या होते? विरला होता. Be doing nothing. Oh my God, this answer motivates so many people. Okay. I don't think I'll be doing anything. I'll find a small house. I would just try and earn enough to live and just like watch movies and do nothing. I love watching movies. But वही होता है यार, if not photographer, I would have utilized some art form, would have been an outlet. I would have started painting, I would have started drawing, I would have started doing something. Doing many things actually. वो creation का basically ये है. So without create ना किया तो बैठ नहीं सकते हैं. कोई point. It means Villa can do many things. हाँ मतलब Villa मतलब like professionally I can't think of anything. Yeah. But creation wise I know I won't sit idle. Like I'll be doing a lot of things. Okay. But professionally I don't know. Like I won't think of it as a profession. I would just think of it, as I said, an artist. I think you develop yourself like that. Right. And you love pets. That's why you have so many cats. Okay. Why you attached with cats? Like maybe some people is like doggy पसंद करते हैं. Animals पसंद करते हैं. Animals, you love animals. It's not about dog or cat. Like I grew up with a dog. Okay. Then I didn't know about cats at all. Okay. धीरे-धीरे I got to know more about cats. I started living with cats. So now I live with 3 cats and one who's up for adoption, 4th one. Yeah. But the reason like animals make sense. Also, I have to tell you, there's this very weird thing. लोग बोलते हैं कि आपको cats पसंद है, dogs पसंद है. I think the correct statement is मुझे कुछ cats पसंद है, मुझे कुछ dogs पसंद है. Okay. It's like saying, do you like human beings? I don't like all human beings. I like some human beings. I hate some human beings. Yeah. Right. So the same way, I like some cats. I like my cats. I like some dogs. Okay. They're nice dogs and bad dogs. I like the nice ones. Okay. So there's no blanket statement. I love everything. I love good animals, good people. So that's what it is. It's like, when you say, why do you love animals? I'm a hardcore non-vegetarian. So it's kind of hypocritical also. मैं सब कुछ खाता हूँ. ठीक है. जो भी animal है खाता हूँ. Maybe we have to edit this. क्यों क्या हो गया? बोला तो. Some people are like, oh my God. Of course, you should keep it. And but the thing is, why do you then like? There's a big question. How can you be non-vegetarian and still say you love animals? Yeah. Right. Yeah. Because it's a simple thing. There are some animals who can be your companions. And then some animals who cannot. जिसको आपने कंपेनियन बना लिया, आप उसको खाओ मत. Right. दोस्तों को तुम हर्ट नहीं करते हो. Yeah, right. Yeah, nice. It's good. Even human beings go and kill other human beings there. किसके लिए? पावर के लिए, पैसा के लिए. Yeah. ठीक है. हम तो खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए खाते हैं. Right. तो इसमें इस इंटरव्यू में एक्चुअली इस प्रोग्राम का नाम ही हमने रखा One2On with Prerna. एंड इसका जो लास्ट सेगमेंट है, हम लोग अभी रेसल करने वाले हैं 1-to-1 लाइक. No, it's not. No, we are not rehearsing actually. And in this question answer cover up जितने भी question होते हैं like 1, 2 or 3 or maybe 4, 5. So you have to answer that. And if you want to skip, then you can skip. There is no issue. So I'll try and answer everything. You have to speak really fast. Okay. हाँ, लेकिन end में prize wise है कि नहीं? Hamper होना चाहिए. We'll try to give a hamper after this. And so can we start? Any character, maybe from a book or a movie that you relate to or that you like?
difficult to say now. Yes. Before Sunset. Ethan Hawke's character. Okay. Jesse. Okay, nice. Message for young photographer. Don't give up. Okay. And However depressing it gets. okay, nice. And best compliment have you received yet? Very many, but one of that you want to Your say. salt and pepper hair looks good. Okay. Oh, beard. Beard was अच्छा. Oh, nice. And your favorite actor and actress, whatever. Difficult. बहुत Okay. मुश्किल. So much options आ जाते हैं ना दिमाग में Yeah, एक का नाम नहीं ले सकते. And movies? What about movies? Movies. There's a movie called Once. There's the Before series, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Okay. And books? Books, I would say. Again, very difficult to say. Very difficult to make one. This one-to-one question is nice. I know. Okay. Good. And do you believe luck or hard work, or maybe both? I don't believe in luck at all. Okay. It's a very selfish concept. It revolves around कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल रही है. Luck is nothing. Okay. And recently you have done any celebrities shoot that you liked? Who? Recently, nahi, but one of my favorite Maybe. shoots is with Nawaz. Any person, or maybe a celebs, or maybe a photographer or writer, whoever, that influence you most? Araki, Helmut Newton, these are photographers. Best company, matlab, Best company. as a person. I think I would like to spend a day with Salvador Dali. Okay, nice. He's dead, but Okay. And अगर आपको मौका मिले चांद पे जाने का, तो आप जमीन पे रहना पसंद करेंगे या चांद पे जाना चाहेंगे? 2-3 साल के लिए जाके वापस आ जाऊंगा. If you have that option, like go somewhere else and do whatever you want to do, or maybe you are in the room and all things are here, then what you want to choose? But you're doing the same things outside also, inside. Like आप घर में हो और आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए, whatever, even सेलेब्स भी आपको चाहिए, वो आपके घर आ जाएंगे. एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाहर जाते हो एंड देन आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, बट विच प्रेफर, घर में रह के? हमेशा घर. Unless you're talking about something like Norway, Switzerland, Iceland, then मैं बाहर जाऊंगा. फिर मैं घर के अंदर नहीं बैठूंगा. लेकिन इस गर्मी में मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा. So you like winter or summer, or maybe Snow. Okay, snow. You love snow. Okay. And what about beach and pahad? Bahar. Okay. And you are an introvert or extrovert, or maybe reticent? Extrovert. Extrovert. Okay. Do you want to ask something with us? What do you want to become? Okay. It's a tricky and hard question. Actually, so there is no fix. I don't want to become a writer or a director or maybe an actor. I just want to do what I love to do in my life. Maybe that time, right now, maybe I love to do interview with you, and maybe after 1 month, I want to do a film. So then at that time, I want to do all this. I just want to say, be in the moment and do whatever you want to do. Nice. तो राइट नाउ जो मुझे स्कोप मिल रहा है या जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है वही करना चाहिए. क्योंकि अगर मैं फ्यूचर का सोच के सोचूं मैं फोटोग्राफर, अगर मैं नहीं बनी, मे बी सिचुएशन कुछ भी व्हाटएवर, देन इट्स लाइक यू शिट मैं नहीं बन. तो आई जस्ट वांट टू नो कि टुडे व्हाट आई वांट टू डू, जस्ट डू, एंड व्हाट बिकेम मे बी नाइस. तो आई जस्ट That's a nice answer. Okay, thank you so much, and thank you for doing with us, and thank you so much for your time and all of those things that you share with us, like many things, photographer, writer, director, and आपने जो भी information दी, it's so informative. I think for many people, it's not for a photographer only, for me also, and so it's so informative. It was and nice. So nice. It was fun. Thank you so much. And hope so we will do once again if then Keep Rolling is released, then I'll do it. Done. Thank you so much. Thank you.